So, students, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. The class Ethics and Values, Part 6. ଆମେ ଗତକାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା କେଉଁଟା ପିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିମେନ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଗୁଣ ସବୁ ରହୁଛି ଭାରତରେ, ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଝିଅମାନେ କିଭଳି ସଫର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆଜି ପଢ଼ିବା। So child marriage is a common practice in many South Asian countries. Child marriage ବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ is a common practice. ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା ଯାହା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି in many South Asian country. ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଏସିଆରେ ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। Girls are most vulnerable to this practice and girls are most vulnerable to this practice. এই जो ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା এই ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅତୀବ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଝିଅମାନେ। It refers to giving in marriage a girl before she attains the age of 18. So what is child marriage? If there is a question in your mind, child marriage is nothing but it refers to giving in marriage a girl before she attains the age of 18. 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହେ? ତାହାକୁ ଆମେ କୁହେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା। So gender inequality, poverty, social norms and insecurity promote the practice of child marriage. So what does practice? Why this child marriage do happens in our society? এই প্রশ্নর উত্তর হচ্ছে জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি, লিঙ্গগত অসমানতা, পভার্টি দারিদ্রতা, সোশিয়াল নর্ম সামাজিক বিধি ব্যবস্থা এন্ড ইনসিক্ୟୁରିଟି নিরাপদ মানে নিজକୁ নিরাপদ মনে ন করিবা। এই জিনিস সবু প্রমোট করে প্রাক্টিস অফ চাইল্ড ম্যারেজর ব্যবস্থাକୁ মানে প্রমোট করছে এই সবু জিনিস। এট মেনি প্লেসেস ইন ইন্ডিয়া মানে ଭାରତର ବହୁତ ଜାଗାରେ at many places in India and worldwide, even if ବିଶ୍ୱରେ girls are marrying at a very tender age କହିଲେ କମ୍ ଏଜ୍ ପିଲେ ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୟସରେ ବାହା କରିଦିଆ ଯାଉଛି। Child marriage violates children's rights to education and health and expose them to high risk of violence. So remember, when a girl is getting married below when she is just below 18 years, at that time what happens, it violates children rights. प्रथम जिनस शिशु मानकर जो अधिकार आईन अछि तार उल्लंघन होछि। Then education, right to education and health, स्वास्थ्यर अधिकार, शिक्षार अधिकार भी एठी उल्लंघन होछि। And also exposes them to high risk of violence. झियो माने हिंसार शिकार भी होउछंती एई बाल्य विवाह प्रथा द्वारा बा शिशु विवाह प्रथा द्वारा। Exploitation and abuse and increasing cases of exploitation and abuse. Exploitation कहले शोषण, then abuse कहले गाली बंद करिबा बा टर्चर करिबा। It generates poverty and gender inequality, and by this system of marriage generates poverty and gender inequality. माने दरिद्रता बढ़े एवं लिंगगत असमानता भी वृद्धि पाए। Child marriage affects both girls and boys, and you cannot tell that only girls are suffering of this system. Boys are also exposed to this system, but it affects girls disproportionately. किंतु झियो मानकर माने पुओ मानक तुलन रे झिया मानकर संख्या अधिक, झियो माने ही बेसी एक्सप्लॉइट होचंती ए केस रे। And this is a form of forced marriage without the consent of the girl. And this marriage, whenever a girl is marrying under 18 age, you can consider it as forced marriage. याकू माने बलपूर्वक विवाह करिबा व्यवस्था बोली भी कुआ जाई परिबो। In some countries, किछिटा देश रे, in some countries what happens, girls as young as 7 or 8 are forced by their families to marry men much older than them. माने 7-8 वर्षर झियो, in some countries, not in all countries,
किछिटा देश रे 7-8 वर्षर झील मान विवाह कर दिया जाउची तांको ठारू ढेर वयस्क पुरुष मानक सह parents prefer to get their daughter married early due to poverty. What is the reason behind this then? The reason is obvious and crystal clear, that poverty. Due to poverty. And ଆଉ କ'ଣ customary practice, ପ୍ରଥା ଆଉ ପରମ୍ପରା, ଚାଳି ଚଳଣି ବା ବିଶ୍ୱାସ ମତବାଦ. Then, and to ensure protection of their daughters from sexual assault. जे मो झील केमिति सेक्सुअली असल्ट न हब अन्य लोकंक द्वारा एक्सप्लोइट न हब, दैट इज ऑल्सो वन रीजन. दैट्स व्हाई फादर्स आर गेटिंग मैरिड देयर डॉटर. बट एते सत्वे यही सब जिनस होतवा सत्वे दे फॉरगेट एंड फेल टू अंडरस्टैंड दैट चाइल्ड मैरिज इटसेल्फ एक्सपोजेस गर्ल टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. द पेरेंट्स they are forgetting that child marriage itself exposes girls to sexual exploitation. तो यह द्वारा भी झील मानकर माने शोषण होउची, यौन शोषण जहाँ कहवा जदि शुद्ध ओडिया कहवा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होउची. एक कथा बापा माँ भूली जाउछंती जे एई एज रे छुआ को बाहा कर दवा द्वारा भी तार सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होउची. गवर्नमेंट लेजिस्लेशन आम जो सरकारी विधि व्यवस्था अच्छी, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन कैंपेन्स एंड पब्लिक अवेयरनेस. कैंपेन्स या विरुद्ध संग्राम भी चली, अवेयरनेस सचेतनता भी सृष्टि कराउची. along with the education of the girls have led to a decline in the number of child marriage in the country. So those things that I told earlier, one is government legislation बा आईनगत विधि व्यवस्था, दुई नंबर जिनस होची कैंपेन्स प्रचारो प्रसार है. देन कम्स पब्लिक अवेयरनेस. कंसेंट मैरिज मीन्स व्हेन बोथ द बॉयज एंड गर्ल्स आर एग्री to marry each other, when opinion of both girls and boys are being taken into consideration and thereafter marriage is fixed, that is called consent marriage. I think you got your answer. So awareness along with education of the girl have led to a decline in the number of child marriage in the country. तो यही सबू रिजन लोग माने झील मैंने पाठ पढ़ुंट, कैंपेन करा जाउची, से माने सचेतन होउचंती, एजुकेटेड होउचंती, एते सबू हैला परे वर्तमान धीरे धीरे डिक्लाइन होउची, कम होउची एटा इन द कंट्री. बट इट हैज नॉट येट बीन फुल्ली स्टॉप्ड. किंतु वर्तमान पर्यंत यह संपूर्ण रूप से बंद है नहीं. In many areas, in बहुत अंचल रे, in many areas, especially in tribal and rural pockets, tribal माने पहाड़िया दुर्गम अंचल एवं गाँ गहली रे, tribal and rural pockets, it is continuing phenomenon. Still it is going on. वर्तमान भी यहाँ चाली ची. ठीक अच्छे पिले. Irrespective of such laws, एते सब आईन हवा सत्वे, irrespective of such laws, action plans, child marriage is still rampant in our country. Rampant कहले कौन भावे बहुल भावे प्रचलित. एते सबु नियम एते सबु विधि व्यवस्था थिबा सत्वे सचेतन लोक मानकु करैबा सत्वे भी बाल्य विवाह प्रथाटा एबे भी चाली छे. Child marriage is still rampant in our country. Customary practice प्रथा और परंपरा चाली चलणी so supersede legal provisions prohibiting it. Legal provision आईन रो व्यवस्था को लोक माने कौन कहउचंती नाही आमर पूर्व पुरुष रे एभली चालुतला एबे भी चलिबो. तो आईन ता बाटरे जीवो, मोर परंपरा मो बाटरे जीवो. एई जो जिनसटा अछि एबे भी माने प्रथा और परंपरा आईन रो ऊर्ध्वरे बोली लोक कहउचंती. This becomes vividly clear from the following practice. I'll tell you. So according to a United Nations report, जब report देखिबा पहले statistics देखिबा, according to a United Nations report, India records the second highest number of child marriage. सारा विश्व रे भारत तो 2 नंबर अछि बाल्य विवाह प्रथा रे. यूनाइटेड नेशन रो रिपोर्ट अनुसार नंबर 2 द यूनिसेफ रिपोर्ट 2019 रे यूनिसेफ जो रिपोर्ट देइथिला states that India is home to 2.23 million child rights. 2.23 million. So पाखापाखि
22,30,000 बाल्य विवाहित स्त्री आम भारत रे अछंते एंड दिस इज 1/3 ऑफ द ग्लोबल टोटल विश्वर समस्त बाल्य विवाहिता मान को जदि हिसाब को निया जाए एटा होची 3 भागरु भागे आउ कौन देखिबा ओवर 47% ऑफ माइनर गर्ल्स इन इंडिया गेट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 47% ऑफ माइनर गर्ल्स इन इंडिया गेट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18 18 वर्ष पूर्व 47% झियो बाहा ही जानते 47%. Look at this number guys. 7% that is 102 million girls marry before the age of 15. 7% that is 102 million girls marry before the age of 15. 15 वर्ष पूर्व 102 मिलियन पाखापाखि केते हबो 10 कोटी बाहाई जानते. Each year at least 1.5 million girls under 18 get married in India. प्रत्येक वर्षर कथा जदि आमे जीवा एवरी ईयर 1.5 मिलियन गर्ल्स कहले 15 लाख झियो अंडर 18 वर्ष पूर्व बाहा होचंती भारत रे प्रत्येक वर्ष ईयर वाइज रिपोर्टेड इज. नेक्स्ट थिंग द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश रिमेंबर उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र Madhya Pradesh are the frontline states in housing child brides. What are those states? I'm telling the name again. Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Maharashtra and Madhya Pradesh. ये स्टेट मानंगरे यही राज्य मानंगरे मैक्सिमम बाल्य माने विवाह होचे. For the first time in British government had passed the Child Marriage Restraint Act in 1929. भारत रे सर्वप्रथमे ब्रिटिश शासन समय 1929 मसीह यही बाल्य विवाह प्रथा अगेंस्ट नियम प्रचलित होता मन रखा 1929 मसीह. इट वाज आल्सो नोन एज द शारदा एक्ट एंड दिस एक्ट ऑफ 1929 बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट इज नोन एज शारदा एक्ट. Next, child marriage has been declared illegal according to the provisions of Prohibition of Child Marriage Act PCMA 2006. 2006 रे जो चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रचलित हला भारत रे या अनुसार यह इल्लीगल आईनगत अपराध. This act is meant to prohibit child marriage rather than merely restrict them. Restriction न होया संपूर्ण भावे मना करा जायछि जे कौन प्रकार बाल्य विवाह एक्सेप्टेबल नुह. नेक्स्ट अंडर दिस लॉ यही आईन अनुजाई अंडर दिस लॉ चिल्ड्रेन हैव द चॉइस टू डिक्लेयर देयर मैरिज void within 2 years of reaching adulthood. यही नियम अनुसार झियो 18 वर्ष माने 20 वर्ष 2 years पर 18 ରୁ 20 वर्ष भितर झीर इच्छा अनुसार झीर विवाह हम नचेत ताहा फोर्स मैरिज बोली कह दैट इज वायोलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स. द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 imposes and according to this act PCMA 2006 imposes a fine of $1,535 कहले पाखापाखि 1,20,000 टंका फाइन दबा पे पड़िबो जदि किए कार केस प्रूफ हो जाए. A national action plan to prevent underage marriages was drafted. What are there? A national action plan to prevent underage marriage was drafted by the Ministry of Women and Child Development in 2013. 2013 मसीह कौन जी बिले नेशनल एक्शन प्लान गोटे जातीय नीति प्रणयन होइछे. ए नेशनल एक्शन प्लान टू प्रिवेंट अंडर एज मैरेजेस माने बयस पूर्वर जो मैंने बाहागर कर बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आमर जो नारी एवं शिशु विकास मंत्रालय रही मिनिस्ट्री रही ता द्वारा कौन नेशनल एक्शन प्लान गोटे तैयारी कौन करने टू प्रिवेंट अंडर एज मैरेज इन द ईयर 2013 2013 मसीह This action plan focuses on law enforcement. आउ यही एक्शन प्लान टा कौन कर बिले दिस एक्शन प्लान फोकसेस ऑन लॉ एनफोर्समेंट आईन केमती ता ऊपर कार्यकारी हबो आईन द्वारा केमती से जिनस को अटका जाई परिबो सेहि पई आईन प्रणयन करा जाई चेंजिंग माइंडसेट एंड सोशल नॉर्म्स एंड दिस लॉ मीन्स टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल लोक मानकर माने मन भितर परिवर्तन अणाजिबो एंड सोशल नॉर्म्स आम जो सामाजिक विधि व्यवस्था अच्छी ता भीतर भी केमती परिवर्तन करा जाई परिबो एम्पावरिंग एडोलेसेंट्स क्वालिटी एजुकेशन एंड शेयरिंग नॉलेज ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय लॉ कमिशन इन 2017 ए जो 2013 रे हैला तापर लॉ कमिशन 2017 गोटे रिपोर्ट तैयारी कले recommends making marriage registration compulsory to prevent forced and early marriage तो 2017 रु आमे जानी थिबा दरकार जे बाहा जदि बेदी रे भी बाहा होचंती लोक ताहले भी तांक पाखरे मैरिज सर्टिफिकेट रहिबाटा मैंडेटरी कारण मैरिज सर्टिफिकेट जदि लीगल करा जाय पारे मैंडेटरी करा जाय न हुए ताहले मैरिज टा को मैरिज बोली एक्सेप्ट करा जाय पारिबो नाही दैट्स व्हाई दिस इज मैंडेटरी स्टिल आमे एको मानु नाही कारण मैरिज सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी हम झील 18 वर्ष आगु के बाहा पारिबो नाही तो पहले पायल रो गोटे छोटिया स्टोरी अच्छी स्टोरी कहबा तापर क्लास सारिबा पायल ए गर्ल फ्रॉम राजस्थान वाज जस्ट 11 year old when she took the decisive step of fighting against her family members who were forcing her to discontinue her school education and get married so पायल गोटे झील थिला राजस्थान रो जाको 11 वर्ष जिते बेले हेइथिला सेही समय रे ता बापा माँ तार बाहागर ठीक कर देथिले केते वर्ष बयस रे 11 वर्ष बयस रे आ सेही समय रे से झियो ता बापा माँ सहित फाइट करथिला से समय रे शी वाज पार्ट ऑफ कैलाश सतरतीस चिल्ड्रन फाउंडेशन बालमित्रा ग्राम व्हिच एनकरेज चिल्ड्रन टू टेक डेमोक्रेटिक एक्शन टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइव्स एंड इन द लाइव्स ऑफ द एंटायर कम्युनिटी and she was part of Kailash Satyarthi you might have known the Nobel laureate of India तो तांकर जो कौन बाल मित्र ग्राम जो मूवमेंट थिला तार पार्ट थिला और से गाँव रे से छोटिया झील 11 वर्षर झील पायल माने समस्त एगेंस्ट रे वॉइस रेज करथिला जे आम गाँव रे बाल्य विवाह कर दिया जीवो नहीं At the second ball pradhan change in their lives and in the lives of entire community at the second ball pradhan child president she was the child president of our village she realized the need to set a positive example for other children in our village से सही समय अनुभव करथिला जे गोटे उदाहरण सृष्टि करिवो अदर गर्ल मानक पई अन्य झियो मानक पई तांको गाँ रे रहउतवा झियो मानक पई and it was the village name was Hisla. The name of the village was Hisla. It was in Rajasthan. It is in Rajasthan, Alwar district. It was a long and arduous journey, but her persistence paid off. Her family finally called off her marriage, and she could continue her education. The journey was long and arduous. Arduous कहले कठिन बिले, दुसह थिला. से यात्राटा माने सहज नथिला. तार जो संघर्षटा सहज नथिला. ताको बहुत कष्ट करिबा पड़िथिला. But finally her parents agreed. Her family called off her marriage. तो तार बाहा माने ठीक ही जाइतिला से बाहाटा फाइनली पोस्टपोन करा गला. She could continue her education. Inspired by the change she could bring about in her own family, she decided to mobilize other children to end the age-old tradition of child marriage in her village. तो तार जिते बेले बाहाघर बंद हो गला मानकु तांको गाँव रो अलगा झियो मानकु से मोटिवेट कला तापरे से गाँव रे संपूर्ण बाल्य विवाह बंद हो गला. She could also stop her sister marriage and continue her fight against child marriage and घुंगट प्रथा. घुंगट प्रथा आम जानी थिबा हमर जो ओढ़णी एबे भी हमर कोस्टल बेल्ट रे जेतले नुआ बाहा ही के असंती
माने दांडू को जदि कूओ को जीवे पानी आनिबा पे एते एते ओढ़णा दिया होची छाती पर्यंत ओढ़णा एबे भी दिया होची ए व्यवस्था एबे भी अछि मु नयागढ़ को बिलोंग्स करे मु जानि छी कोन केमती हुए तो प्रथा इट टुक ए ईयर टू ब्रिंग अबाउट द चेंज एंड द विलेज वुमेन जॉइंड हॉट टू स्पीक आउट एंड वॉइस देयर ओपिनियन हैं तो एटा कोन हला पिले इट टुक ए ईयर टू ब्रिंग अबाउट द चेंज गोटे कम से कम गोटे वर्ष लगिला से परिवर्तन आनिबा पई एंड विलेज वुमेन गार समस्त स्त्री जॉइंड हर टू स्पीक आउट एंड वॉइस देयर ओपिनियन तो ये पर्दा प्रथा अगेंस्ट से जेते बेले कहला ताकू वर्षटे लगिला वर्षटे परिश्रम करबा पे पड़ला आ वर्षे परे गार समस्त स्त्री ताकू सपोर्ट कले जे ये ठीक कहूची झीटा ठीक कहूची इन 2000 वर्तमान पायल कौन कौन सब प्राइज पाइला पिले इन 2013 2013 रे पायल वाज चूजन एज द जूरी मेंबर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज मिलिथिला ताकू केबे 2013 रे फॉर आवर वर्क इन हिंसला रे से करथिबा काम पे शी वाज आल्सो अवार्डेड द सावधान इंडिया सम्मान instituted by Life OK channel to award real life heroes who have helped create a safer society. इंस्टीट्यूटेड बाय लाइफ ओके द्वारा दिया जाउथबा सावधान इंडिया सम्मान भी ताकू दिया जाइतिला पिले को ईयर रे 2016 रे एंड यंग अचीवर अवार्ड बाय ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ब्रांड रिबक द्वारा 2017 मसीह रे को प्राइज मिलिथिला ताकू वर्ल्ड अचीवर यंग अचीवर अवार्ड कोन यंग अचीवर अवार्ड बाय ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ब्रांड रिबक इन 2017 ऑन सितंबर 25 2019 सेप्टेम्बर 25 2019 रे पायल रिसीव द गोलकीपर्स ग्लोबल गोल चेंज मेकर अवार्ड बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन द्वारा सेप्टेम्बर 25 2019 रे ताको सबटर बड़ प्राइज मिलिथिला जोटा होतिला गोलकीपर ग्लोबल गोल चेंज मेकर अवार्ड आ एई प्राइज ता किए दउतिला बिल एंड मेलिंडा गेट बिल गेट्स तमे समते सुनिथिबा was just 17 and at the time she was just 17 now Hinsla is known as a child marriage free village आ वर्तमान से हिंसला होची गोटे चाइल्ड मैरिज फ्री गाँ से गाँव रे बाल्य विवाह नहीं सो द क्वेश्चन arises here why can't all the girls watching the class be a पायल जो माने भी देखुछ झियो माने तमे काहे कि पायल हेई पारिबो नाही तमे काहे कि तमे माने फाइट करी पारिबो नाही यस और नो सो दैट्स ऑल गाइस आसंता काली पुणी देखाओ सी यू देयर स्टे ट्यून्ड मास्टर ऑफ इंग्लिश